Good afternoon. This is the midday news on Rajya Sabha TV. I'm Aishwarya with you. All the developing news stories at the top of this hour coming up ahead. First up, a look at the top headlines. Lander Vikram loses communication with ground station just minutes before touchdown. ISRO analyzing data from the orbiter. President Kovind hails ISRO for showing exemplary commitment and courage. Vice President says ISRO lost communication, not the hopes of 1.3 billion Indians. India proud of our space program and scientists, says Prime Minister Narendra Modi. Addressing ISRO scientists, the Prime Minister asserts resolve to touch the moon has only become stronger, expresses confidence that ISRO will scale newer heights. Prime Minister Modi lays foundation stone for 3 metro lines in Mumbai. Board's first state-of-the-art metro coach built under Make in India. Says these projects will provide employment, make lives of Mumbaikars easier. President Nath addresses 9th National Youth Summit Gyanotsav, says youth playing a key role in the success of schemes like Swachh Bharat, making their mark on the world stage across all fields. And AIBA World Boxing Championship begins in Russia today. MC Mary Kom eyes a record 7th World Championship gold. 2018 Asian Games gold medalist Amit Pangal leads India's men contingent. Chandrayaan 2 lander Vikram lost communication with the ground station just minutes before making a soft landing near the south pole of the moon. ISRO chairman K. Sivan said that Vikram descent was planned and it happened as planned, and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometers from the lunar surface. However, after that, the communication from lander to the ground station was lost. He said that ISRO was analyzing the data. This is Mission Control Center. Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. Repeat, Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. The lander Vikram, named after the India space pioneer Vikram Sarabhai, was scheduled to land on the moon's surface at around 1:52 a.m. Prime Minister Narendra Modi was present at the ISRO Center in Bengaluru to witness the historic moment. The lander Vikram began its descent at 1:38 a.m. on Saturday night. However, the communication was lost when the lander was just 2.1 kilometers away from the moon's surface. However, the Chandrayaan 2 orbiter is healthy and safe in the lunar orbit. The mission life of the 2,379 kilogram orbiter is 1 year. Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, communication from the lander to the ground stations were lost. Data is being analyzed. The planned press conference, hence, is called off.
And just hours after the communication was lost with the Chandrayaan lander, Prime Minister Narendra Modi addressed the scientists at the ISRO Centre in Bengaluru. And Prime Minister Modi said that the country is proud of its scientists and the space program. He said that hurdles will not dampen our spirit. He said that this has only made our resolve to touch the moon even stronger. He told the scientists not to get disheartened by the hurdles in the moon mission Chandrayaan 2 and asserted that there will be a new dawn. He added that the best is yet to come in our space program and India is with ISRO. बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था, उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ने की हमारी परंपरा भी रही है और हमारे संस्कार भी है। हमारा हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है, जब शुरुआती रुकावटों के बावजूद हमने ऐतिहासिक सिद्धियां हासिल की है। खुद इसरो भी कभी न हार मानने वाली संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। अगर अपनी शुरुआती दिक्कतों और चुनौतियों से हम हार जाते तो आज इसरो दुनिया की अग्रणी स्पेस एजेंसी में से एक का स्थान नहीं ले पाता। साथियों, परिणाम अपनी जगह है, लेकिन मुझे और पूरे देश को, अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैंने आपसे रात में भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। देश भी आपके साथ है। साथियों, हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। कुछ नए आविष्कार, नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करती है और इसी से हमारी आगे की सफलता तय होती है। हर प्रयोग, हर प्रयास ज्ञान के नए बीज बोकर जाता है, नई संभावनाओं की नींव रख करके जाता है और हमें अपने असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन
हमें ये भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, जानदार रही है। इस पूरे मिशन के दौरान देश अनेक बार आनंदित हुआ है, गर्व से भरा है। इस वक्त भी हमारा ऑर्बिटर पूरी शान से चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। And Prime Minister Narendra Modi consoled an emotional ISRO chief K. Sivan, patting his back after his speech at the ISRO Center. The nation is standing proudly by ISRO after lander Vikram lost contact with the ground station just minutes after touchdown. Now, support has been pouring in from all over the country for all the scientists. In a Twitter message, President Nath Kovind said that the entire team of ISRO has shown exemplary commitment and courage, and the country is proud of ISRO. हम सब लोगों ने देखा कि लगभग पौने 2 महीने तक वो मिशन पूरी सफलता के साथ काम करता रहा, पूरी सफलता के साथ। और ऑर्बिट तो अभी भी घूम रहा है, 1 वर्ष तक चक्कर लगाएगा। वो ऑर्बिट से ही हमें फोटोग्राफ्स वगैरह मिल रहे हैं। लेकिन इसमें जो हम सब लोगों को मोटे तौर पर जानकारी मिली है कि इस मिशन ने लगभग 3,84,00,000 किलोमीटर की यात्रा सफलतापूर्वक पार की। और मात्र जब वो चंद्रमा के सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जब उसका मोमेंट आया था, तो मात्र जो दूरी थी वो केवल 2 किलोमीटर थी। और 2 किलोमीटर को यदि इस अनुपात में हम लगाएंगे 3.84 लाख किलोमीटर में, तो मुझे लगता है कि शायद उसको हम 0.000 और हम लोग शायद 2 दिन तक ये 00 लगाने के बाद में 2 कहेंगे, तब शायद आएगा। इतनी बड़ी सफलता हमने जो हासिल की है, उसके लिए मैं आज फिर अपने सभी स्पेस जगत के इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आज मैं फिर कहता हूं कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। And Vice President M. Venkaiah Naidu tweeted, "There is nothing to despair." He said that ISRO has not lost the hopes of 1.3 billion Indians. He saluted the scientists, engineers, and everyone else associated with the Chandrayaan 2 for their hard work and dedication. And earlier, Prime Minister Narendra Modi had also tweeted saying that India is proud of our scientists, saying that these are moments to be courageous. He also said that India remains hopeful and will continue working hard on our space program. And Home Minister Amit Shah said that ISRO's achievements with getting Chandrayaan 2 so far has made every Indian proud. He added that the country stood with the committed and hard-working scientists of ISRO. And also, Finance Minister Nirmala Sitharaman extended her support to the ISRO scientists, saying that ISRO has brought the nation together in sensing its achievements in the space. And Union Minister for Science and Technology, Dr. Harshvardhan, urged the scientists not to give up, expressing optimism that the ISRO scientists would accomplish the mission in the future. And congratulating ISRO, Congress leader Rahul Gandhi said that their work was not in vain. He said that Chandrayaan 2 has laid the foundation for many more path-breaking and ambitious Indian space missions. Time for some other news now. Prime Minister Narendra Modi today launched metro projects worth over 19,000 crore rupees in Mumbai today. He launched
these metro lines, 3 of them which will add more than 42 kilometers to the network of the city. He also laid the foundation stone of a state-of-the-art metro bhavan. The 32-story centre will operate and control 14 metro lines measuring around 340 kilometers. The Prime Minister also inaugurated the Bondongari metro station in Kandiwali East and a state-of-the-art metro coach, which is the first metro coach under the Make in India initiative. बीते 5 वर्षों में आमची मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। यहां फडणवीस जी की सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र के एक एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है, ये मैं भली भांति जानता हूं। आज जब देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तब हमें अपने शहरों को भी 21वीं सदी की दुनिया के मुताबिक बनाना ही होगा। मोबिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो या फिर सेफ्टी, हर लिहाज से एक बेहतर व्यवस्था हमें तैयार करनी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार अगले 5 साल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस राशि का बहुत बड़ा लाभ मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के तमाम शहरों को भी होने वाला है। And Prime Minister Modi also offered prayers to Lord Ganesh at the 96-year-old Lokmanya Seva Sangh at Vile Parle in Mumbai. And President Nath Kovind today addressed the National Youth Summit 2019, the Gyanotsav being organized at Vigyan Bhavan in national capital. Addressing the event, President Nath Kovind said that the youth of the country are making their mark on the world stage in all fields, from science and technology to sports. He said that the youth participation played a crucial role in making schemes like Swachh Bharat mission a resounding success. He also hailed the dedication of the scientists of ISRO. यूनाइटेड नेशंस ने वो जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके लिए एक उन्होंने टारगेट डेट रखी है और वो है 2030। और हम लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए कि भारतवर्ष लगभग उस टारगेट डेट 2030 के पहले लगभग 11 वर्ष पहले जो पूरे विश्व में होना चाहिए वो भारतवर्ष में, वो हम 11 वर्ष पहले पूरा कर देंगे। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में, लोगों को प्रेरित करने में युवाओं ने बहुत प्रभावशाली योगदान दिया है। देवी और सज्जनों, हमारे युवाओं में असीम प्रतिभा और ऊर्जा है। इस प्रतिभा और ऊर्जा का समुचित विकास और उपयोग किए जाने की जरूरत है। इस दिशा में प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आने लगे। ज्ञान, विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर खेल के मैदान तक भारत के बेटे बेटियां विश्व समुदाय पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। And union ministers and other parliamentarians joined Lok Sabha Speaker Om Birla on Friday as he launched the Fit India drive at the Parliament House. The Lok Sabha Speaker said that the MPs should ensure that people in their constituencies take to the fitness drive, and there should be a healthy competition among them to be one of the fittest places in the country. He said as yoga gained in popularity since the start of the International Yoga Day at India's behest, Fit India movement should also become a people's movement.
Sports and Youth Affairs Minister Kiran Rijiju said that the message is that only a healthy nation can become a strong nation. Remember, Prime Minister Modi had launched the Fit India movement on 29th of August to mark the National Sports Day. हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फिट इंडिया मूवमेंट को हम जन आंदोलन बनाएं और सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र में जनता को जन आंदोलन बनाकर वहाँ जनता तन से, मन से, शरीर से स्वस्थ रहे और व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक है और स्वस्थ रखने के लिए फिटनेस होना आवश्यक है। शुष्क व्यायाम, योग, अन्य तरीके से व्यायाम कर आदमी स्वस्थ रहे, इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मुझे आशा है कि देश की 130 करोड़ जनता का जन आंदोलन बनेगा और हम सब जनता को स्वस्थ रखने में कामयाब होंगे। देश के लिए हम सबको फिट रहना जरूरी है और बहुत ही साधारण जो अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा व्यायाम हर आदमी को करने की आवश्यकता नहीं है, जितना सकता है उतना। अगर एक दिन 10 किलोमीटर पैदल चल सकता है ठीक है, नहीं 1 किलोमीटर चल सकता है वो भी ठीक है, जॉगिंग कर सकता है, योगा कर सकता है, कुछ भी करे। या आप 3 डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी में रहता है तो उसमें आप लिफ्ट इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप बीमार नहीं है, शारीरिक रूप से ठीक है तो चलिए। इस तरह का साधारण रूप से, बहुत सिंपल रूप से जो खेल सकता है खेलिए, जो कुछ कर सकता कीजिए, लेकिन पसीना बहना चाहिए, मतलब शरीर को गतिविधि मिलना चाहिए। Vice President Venkaiah Naidu has called upon educational institutions to partner in programs such as Fit India and Khelo India and encourage students to lead an active life. Now, addressing the Silver Jubilee celebrations of Maharaja Agrasen College in New Delhi on Friday, Venkaiah Naidu stressed on the need to provide a multidisciplinary and holistic education and asked the academicians to promote critical thinking, problem solving and global outlook among students. We are fortunate to have a demographic dividend of 65% of our population are youngsters who are below 35 and 32 years. No other country in the world has got this advantage. If you put your house in order, if you evolve broad consensus, if you pursue with vigor and then fight out the social evils and also economic evils and take corrective actions, India will become unstoppable. I am very sure about it. Sports news now, and Russia is all set to host the 2019 edition of the AIBA World Boxing Championships, and starting from today, these boxers will compete for one of the most decorated boxing titles in the world. And leading India's charge at the championship will be 2018 Asian Games gold medalist Amit Pangal in the 52 kilogram category. And accompanying him under the tricolour will be Kavinder Singh Bisht, Manish Kaushik, D. Singh Negi, Ashish Kumar, Brijesh Yadav, Sangeet and Satish Kumar. The Indian boxers who will win medals at the upcoming World Championships in Russia will get a direct entry into the national squad for next year's Olympic qualifiers. And in the women's category, MC Mary Kom is eyeing a record 7th World Championship gold medal, which will take her past the Cuban legend Felix Sebon if she manages to achieve that feat. This time, she will compete in the 51 kilogram flyweight category, that is the one chosen for the 2020 Tokyo Olympics, and not the 48 kilogram category. And with that, we wrap up this edition of Midday News. Thanks so much for your time.